Okay, good morning. We need to get started. So this week's lectures were about conditional probability and independence. These are two interrelated topics. The two lectures that were assigned for viewing, lecture 7 and lecture 8, they were more focused on conditional probability. Next week we will talk about independence. So we'll continue this topic and talk about independence, but this week was more focused on conditional probability, and the homework is also all the homework problems were also based on the conditional probability topic that is discussed in these two lectures. We had also uploaded the accompanying notes, class notes, or on these topics. So if there are any specific questions about the concepts covered here, or about conditional probability, about any specific problem in the homework, quiz problem, anything that you want to discuss, feel free to ask now. Sir, can you explain the last part of the notes, which says, which talks about the 3 cards selected from a deck without replacement and uses the probability of S1 given S2, S3, that one. Can you explain that? Sure. So we are talking about the 3 card problem in which 2 cards are same on both sides red or both sides black, and one card is one side red and one side black, right? Yeah. Okay. Let me just see if I can share the screen here. So is the screen visible? Yes, sir. Okay. So so now you are given this information that there are 3 cards, and the 3 cards are such that first card has, one card has both sides red, another card has both sides black, and the third card has one side red and the other side black. So the experiment consists of picking one card and then putting this card either face up or face down. Okay, so when you pick one of the 3 cards, there is 1/3 probability that you will pick card 1, 1/3 probability you will pick card 2, 1/3 probability you will pick card 3. It doesn't matter which card you pick, the probability of picking a card is 1/3. A specific card is 1/3. Okay, once you pick the card, now you have 2 options. Either
one side will be up or the other side will be up. No? So you will place the card, either one side will be up or the other side will be up. So what you have done in the experiment, you picked one card and then you picked one of the sides, and it turned out that the top side is red. ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये top side जो है वो red आ गई है उसकी, ठीक है. So this is the information which is already given to you, and then it is being asked, given this information, what is the probability that the other side is black? Okay. Now, if I had not given this information to you, that the top is red, if I had not given this information to you, if I tell you that pick one card, what is the probability that it is the third card? What is the probability that this is the third card? Kya probability would be? 1/3. That would be 1/3. Okay. Let's take a look whether given this information that the top is red, do we get a different answer or same answer? So in this case, what we need is the probability that we have picked the third card, card 3, which is one side black and one side red, where R is the event that the top side of some randomly selected card is red. So so we are required this probability of C3 given R, and R means that the whatever card you select, the top side of that card, whatever card you select, the top side of that card would be red. So by using the conditional probability formula, probability of C3 given R is equal to C3 and R, the probability of the intersection of the two, divided by the probability of R. And probability of R, don't forget that R is the event that whatever card you pick, the top side will show red. R is the event. Very important to understand that R ye kya event hai. R is the event that top side of some randomly selected card is red. It's very important to realize that what is the definition of R. Okay. So now we can find this numerator and denominator separately. So probability of C3 and R, again applying the conditional probability formula, is now think about it. कि ये event क्या कह रहा है? This event is saying कि you picked the third card and then you placed this card, showing one of the faces. So now I'm saying that this event, this compound event, ये जो मैंने अभी circle किया है यहाँ पे, this event is saying कि what is the probability that you picked card 3 and you placed the third card such that the red face was showing up. ठीक है? Very, very important to understand कि ये क्या चीज है. So I apply this conditional probability formula here. Conditional probability का formula यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, या multiplication rule इसको कह सकते हैं. We have discussed multiplication rule as well. So in fact, multiplication rule directly comes from the conditional probability formula. So probability of C3 and R is the probability that you picked the third card, which is 1/3, which is given here, and then the probability that the face shows R, the top face is R, is red, given that you pick the third card. Okay. Probability of R given C3 is not the same as the probability of R given C1. So probability of R given C1 would be 1, because if you picked card 1, then it doesn't matter which side shows up, वो हमेशा red ही होगी. ठीक है? So this 1/2 is the probability that you place the card such that the red side was up. क्योंकि 50% chance था कि मैं black वाली side को ऊपर कर देता और 50% chance है कि red वाली side ऊपर हो जाएगी. So this would be 1/6. So we are done with the numerator. ये जो हमने जो चीज find out करनी थी, उसमें we are done with the numerator. Now we go to the denominator. Before we do that, are there any questions? या अभी तक ठीक जा रहा है? अभी ठीक जा रहा है. So now we calculate this denominator, which is probability of R. Probability of R, we calculate the probability of R
by conditioning on, ठीक है, we compute the probability of R by conditioning on. हम probability of R नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो, जब तक ये ना पता हो कि हमने पहला कार्ड पिक किया था या दूसरा किया था या तीसरा किया था. So the probability of R, which is कि red face shows up, is dependent upon कि आपने कार्ड कौन सा पिक किया था. मैं फिर ही बता सकता हूं ना, ये दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज सेइंग कि एक बॉक्स है जिसके अंदर रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल इज रेड. मैं नहीं बता सकता जब तक मुझे ये ना पता हो कि पहली बॉल जो है वो रेड थी या ब्लैक थी. सो मुझे पहली बॉल के ऊपर कंडीशन करना पड़ेगा. ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वे, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, आई विल नीड टू यूज ये जो हमने यहां यूज किया है, दिस इज partitions or law of total probability. या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने जो कार्ड पिक किया है उस कार्ड की कौन सा कार्ड था, उस कार्ड के ऊपर मैंने कंडीशन किया है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R is, how can I see the face as red? There are three paths. ऐसे हो सकता है कि मैंने कार्ड 1 पिक कर लिया हो, ऐसे हो सकता है मैंने कार्ड 2 पिक कर लिया हो, ऐसे भी हो सकता है मैंने कार्ड 3 पिक कर लिया. कार्ड 1 अगर मैंने पिक किया हो तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, हमें पता है कि अगर कार्ड 1 पिक किया हो तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी ऑब्वियसली. ठीक है, बिकॉज C1 जो है उसमें तो ब्लैक है ही नहीं, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और टॉप फेस के रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. इफ आई पिक C2 देन इसमें भी R या B दोनों हो सकते हैं. रेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें 0 है और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इसमें 1 हो जाएगी. ठीक है, इफ यू पिक C3 तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी? 1/2 एंड देन ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट इट, देयर आर 3 पाथवेज कि मेरे पास रेड आ सकता है. so probability of R here is either I start here and I go through this path, or I go through this path, or I go through this path. इसके अलावा और कोई पार्ट तो नहीं है रेड टॉप फेस को रेड लाने का. कार्ड 1 आ जाए और फिर उस पर रेड नजर आ जाए, कार्ड 2 आ जाए और उस पर रेड नजर आ जाए, कार्ड 3 आ जाए और उस पर रेड नजर आ जाए. इसके अलावा देयर इज नो अदर वे यू कैन सी द रेड. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? यस सर. ठीक है, सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ R वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाए कार्ड 1 के साथ, रेड आ जाए कार्ड 2 के साथ, या रेड आ जाए कार्ड 3 के साथ. Why I have added these probability? Because these probabilities are added because these events, ये जो मैं अभी सर्कल करने लगा हूं, these events R and C1, R and C2, R and C3, these are mutually exclusive events. If I pick card 1, then there is no way I am going to be picking card 2 or card 3. So card 2 pick कर लेंगे या card 3. So these 3 events, ये जो blue में सर्कल किए हुए हैं, these 3 events are mutually exclusive events, and these are the only 3 ways I can get a red face showing up. Okay, so if you break this down, R and C1, this can be written as probability of R given C1 into probability of C1. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये न्यूमरेटर कैलकुलेट किया था C3 and R वाला, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया. सो यू कैन सी कि फर्स्ट टर्म हियर R given C1 into probability of C1, R given C2 into probability of C2, plus R given C3 into probability of C3. So what is the probability of R given C1? What is the probability of R given C1? If you pick card 1, then with 1 probability, जो भी फेस आपके सामने आएगा, ऊपर वाला फेस जो है वो 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो रेडी होगा. सो दिस 1 comes from that fact, and 1/3 is the probability that you picked card C1. ठीक है, what is the probability that the face showing up is R given that you have picked card 2? That's 0, because ये वाला जो पाथ है इसमें आपने कार्ड 2 पिक कर लिया है, there is no way the top face will show red.
Okay, so this is going to be 0 times 1 by 3. 1 by 3 is the probability that you pick card 2 into the probability that R given C3, which is 1 over 2, into the probability of C3, which is 1 over 3. Okay. Make sense? Yes, sir. तो ये इसको सॉल्व करें तो ये 1 over 2 आ जाएगा. डिनोमिनेटर वी आर डन विद दैट एज वेल. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो गए. ये आपके पास आंसर आ गया. Okay, I understand. Thank you, sir. Okay. So so in these two lectures, this is one of the important things that we have studied. Okay, again, let's say you have a box जिसके अंदर कुछ ये आपने रेड बॉल्स रख दी हैं और कुछ जो है हम इसमें ब्लैक बॉल्स रख देते हैं. ठीक है. If I ask you कि what is the probability of R2, where I define the event R2 as event that second ball is red. Second ball is red. I cannot answer that directly. Why cannot I answer that? The reason that I cannot answer that is because I need to know whether the first ball that you picked was red or black. It is important, also important to realize कि हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें सेकंड बॉल का मतलब ये है कि पहली बॉल निकाल के आपने वापस रिप्लेस नहीं की है. अगर पहली बॉल निकाल के वापस रिप्लेस कर दी है तो फिर तो सबको पता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पिक अ रेड बॉल आउट ऑफ दिस बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कोई आंसर कर सकता है? So if I ask you what is the problem? 4 over 9. 4 over 9. 4 over 9. So probability, if you pick one ball out of this box, it's going to be 4 over 9. Okay? If you pick another ball from this after replacing the first one, पहली वाली आपने वापस रख दी तो ये दोबारा इसी शेप में आ गया. So what would be the probability of the second ball to be red if you replace the balls back? Whatever ball that you had picked in the first try में जो भी बॉल आपने पिक की थी उसको वापस रख दिया है. अब दोबारा आपने एक और बॉल पिक की है, which means you are starting with the same situation. So probability of R2 in that case would be equal to again 4 over 9. 4 over 9. But we are talking about pick two balls without replacement. Without replacement, very important. So I cannot answer this directly until I know what was the color of the first ball. So what I do here is कि इसको मैं कह देता हूं कि probability of R2 and the first ball is R1. First ball was red plus probability of R2 and the first ball was black. ठीक है. Why? Because ये जब आपने पहली बॉल पिक की तो आपके पास पहली बॉल जो है वो रेड हो सकती थी या ब्लैक हो सकती थी. This is the first ball. And once you pick the second ball after you have picked the first ball, तो first ball के बाद second ball जो है वो भी आपकी या रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है या ब्लैक हो सकती है. So this is your second ball. Now I am asking the question. What is the probability that the second ball is red? ठीक है. ये भी देखें कि second ball is red है. ये जो मैंने green circle किया है ये भी second ball is red है. ठीक है. So there are two different pathways you can get a second ball as red. कि पहली ball या तो black आ जाए या पहली ball जो है वो red आ जाए. ठीक है. So the probability of R2 here is going to be the probability that R2 R1 and probability of R2 B1. So ये मैंने दोनों paths जो हैं उनको consider कर लिया कि पहली वाली red आए और दूसरी वाली भी red आए या पहली वाली black आए और दूसरी वाली red आ जाए. इसके अलावा there is no other way you can get the second ball as red. ठीक है. और फिर ये इसके ऊपर इसको हम ये कर सकते हैं probability of R1 into probability of R2 given R1.
It's very easy to calculate probability of R2 given R1. Why? What is the probability of R1? सबने मुझे बताया है कि this is 4/9. This is 4/9. Why? Because 4 red balls and total 9 balls हैं, तो 4/9 होगी. What is the probability of R2 given R1? Given R1 का मतलब ये है कि अब आपने red निकाल दी है and you are not replacing it back. What is the probability of R2 given R1? Anyone? 3/8. Yeah, this is going to be 3/8. Plus the probability of B1 into probability of R2 given B1. R2 given B1. What is the probability of B1? Anyone? 5/9. It's going to be 5/9 into the probability of R2 given B1. R2 given B1. अब आपने ब्लैक निकाल दी है और उसको उठा के साइड पे रख दिया है, ठीक है? You are not replacing it back without replacement. So what is probability of R2 given B1? कि आपने ब्लैक बॉल एक निकाल दी, उसको साइड पे रख दिया. Now you pick the second ball and it turns out to be red. What is the probability of R2 given B1? Anyone? 4/8. This is going to be 4/8 क्योंकि 4 रेड रह गई हैं आपकी and out of 8 balls. ठीक है? This is exactly the same thing जो हमने यहाँ पे की है, ठीक है? And by the way, this is called partitions. Okay? एक और चीज मैं यहाँ पे point out कर दूं, which might be useful. It's a very trivial thing, but it might be useful in solving problems. कि ये जो probability of R2 and R1 ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? So probability of R2 and R1 and similarly R2 and B1, मैंने इसको जो है जरा ब्रेक डाउन किया है. मैंने इसको 2 टर्म्स में ब्रेक डाउन किया है. इसको मैंने ऐसे लिखा है, probability of R1 into probability of R2 given R1. ठीक है? So this is according to multiplication rule या conditional probability formula, दोनों एक ही बात है. तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया, ठीक है? I could have broken it down in a different way, which is probability of R2 into probability of R1 given R2. ठीक है? ऐसे भी कर सकता था मैं, लेकिन there is a reason I have written it this way and not this way. ठीक है? इसका यह मतलब नहीं है कि ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट बिल्कुल है. अगर मुझे ये दोनों probabilities पता हो तो I will get the correct answer. The formula is correct, but I intentionally did not write it this way. Can anyone explain why? कोई बता सकता है? Because that says the second term says probability of R1 given R2, which means the first ball is red given the second ball is red. But we haven't even picked the first ball yet. That is that correct. one happened first. That is correct. So although I can find this probability, I can certainly find this probability, it is very hard. It is very hard to calculate in the situation which is given to us. ठीक है? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि the second ball is red. Now tell me what was the probability of the first ball was red. Yeah. So you pick the first ball first and second ball later. Okay? Knowing that the first ball is red, it's very easy. It's very easy to calculate the probability of R2 given R1. ये चीज calculate करना बहुत आसान है. Easy. Why is it easy? Because R1 का मतलब है कि पहली बॉल आपने पिक की और वो रेड आ गई और उसको आपने अलग कर दिया, यहाँ से एक रेड को उठा के बाहर ले जाए, ठीक है? एंड देन कैलकुलेट R2 which is going to be 3/8 जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है. लेकिन इफ आई टेल यू कि सेकंड बॉल रेड निकल आई है, अब मुझे ये नहीं पता कि पहली बॉल क्या थी. आई टोल्ड यू दिस इंफॉर्मेशन कि सेकंड बॉल इज रेड, फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R1. very hard to compute that, at least in this setup. लेकिन I can still compute that. ऐसी भी situations आती हैं कि आपको बाद वाली चीज जो है वो बता देते हैं, उसकी आउटकम बता देते हैं और आपसे पूछते हैं कि पहले क्या हुआ था. कि second ball turns out to be red. I can actually ask this question
कि what is the probability that the first ball was red given that the second ball turns out to be red. If you are asked this question, ठीक है, you can certainly answer this question. कैसे आंसर कर सकते हैं? ऐसे आंसर कर सकते हैं probability of R2 ये हमने यहाँ पे ऊपर मालूम की है, ये इस जगह मालूम की है. So this guy is known. Probability of R1, this guy is also easy. R2 given R1, easy. So if you think about it, okay, these two guys, this guy here and this guy here, these two guys are equal. इसमें से आपको 4 terms हैं, इनमें से 3 पता है तो चौथी obviously आप निकाल सकते हैं. And the way that you find this fourth guy is, ये हमारा Bayes rule है. This is our Bayes rule. Okay, you are given a later thing, something which happens later. R2 is the second ball turning out to be red. This happens later, or first ball is red happens earlier. So you are given a later event and you are asked the probability of an earlier event. ठीक है? So earlier वाला दिया हो तो later को मालूम करना आसान होता है, लेकिन अगर later वाला दिया हो और earlier मालूम करना हो, so I can use the Bayes rule, which is really equating these two. ये इन दो को equate करना होता है. Bayes rule वही होता है. So for this example, if we ask you, I tell you, the second ball turns out to be red, which means कि या ये वाली चीज हुई है या ये वाली चीज हुई है. I don't know which path was taken. I really don't know which path was taken, but I have given you the information कि ये जो ये हुआ है या ये हुआ है, which means कि second ball is red. ठीक है? Now I am asking you, give me the probability that the first ball was red. I am asking you this probability. So I am asking you कि ये वाली बता दें. That you can answer by using the Bayes rule. ठीक है? And by using these equations. ये इसकी एक हमने और एग्जांपल दी हुई है. If you are going to Islamabad from Lahore, तो या GT road से जा सकते हैं या motorway से जा सकते हैं. So there are, obviously there are many other ways, but these are that. Let's consider these two possible ways: GT road or motorway, and you can get a ticket on GT road or you can get a ticket on motorway. So there is some probability that you will take the GT road, and 1 minus that probability you will take the motorway. Let's say 70% chance you will take GT road, 30% chance you will take the motorway. It has to be 100%. दोनों में से कोई एक पाथ तो लेना है ना. ठीक है? So दोनों की probabilities add करके 1 होनी चाहिए. So 30% GT road and 70% motorway, or 40% GT road, 60% motorway. कोई एक इनकी probabilities हैं इन paths को लेने की. And then you can get a ticket. If you are going on GT road, then maybe you are more careful and the probability of getting a ticket is 10%. If you are going on motorway, then you are being less careful and the probability of getting a ticket is 30%. Okay? So I can ask you this question: what is the probability? I don't tell you which path did you take. But I ask you this probability. What is the probability when you reach Islamabad on your way, irrespective of which path did you take, on your way you got a ticket. Okay? So पहले आप choose कर रहे हैं कि GT road या मोटरवे, और उसके बाद जो है वो आपको टिकट मिल रहा है. ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे ये GT रोड और मोटरवे, और फिर GT रोड भी ले सकते हैं, मोटरवे भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टिकट और नो टिकट और नो टिकट, T complement, which means no ticket. ठीक है? So if I ask you what is the probability of getting a ticket, then you can answer this question by considering this path and by considering this path. ठीक है? ये probability भी हमें पता है, ये probability भी हमें पता है, ये भी probability पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, सारी चीजें पता है. ठीक है? So the probability of getting a ticket is going to be the probability that you took GT road and you got a ticket, plus probability that you
took motorway and you got a ticket. That's the probability. So, and this is law of total probability. Law of total probability. या इसको हम ये भी कहते हैं partitions भी इसको कहते हैं. But if I ask you the flip question, I ask you the question कि given that you got the ticket, okay, find the probability that you took the motorway. So I have to answer this. Probability of M given T. Probability of M given T. When I break this guy down, I'm going to break this down as probability of motorway and probability of T given M. Because it's very easy to calculate P of M. This is the probability you took the motorway. ये शायद आपको शुरू में दी होगी. And probability of you got a ticket given that you took the motorway. ये भी शायद पहले ही आपको दी होगी. ये भी शायद आपको पहले दी होगी. So let's say there is 40% chance you took the motorway and 60% chance you go through the GT road. 30% chance you got the ticket on motorway and 70% you did not. और यहाँ पे आपको 10% chance you got the ticket and 90% chance that you did not get the ticket. Okay? So P of M is this guy 0.4. P of T given M is this guy 0.3. Okay? If I ask you this question, what is the probability of M given T? This cannot be easily answered. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको टिकट मिल गया है. बाद वाली चीज मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको पहले क्या आपने डिसीजन लिया था कि मोटरवे लेनी है या जीटी रोड लेनी है? I did not tell that to you. ठीक है, लेकिन ये बता दिया टिकट मिल गया, which means कि या ये हो गया या ये हो गया. ठीक है. Now I am asking you what is the probability that you actually took the motorway. So this can be answered by using partitions, by using Bayes rule. ठीक है. जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि बाद वाली चीज दे के आपसे पहले वाली चीज पूछी जाए तो वहां पे Bayes rule लगता है. ठीक है. So this can be written as probability of T given M into probability of M divided by probability of T. और probability of T क्या चीज है? Probability of T is something that you have just found here. ये चीज आपने फाउंड आउट कर दी है. And what is this guy here? ये वही चीज है जो आपने इसका एक पोर्शन है जो ये ऊपर फाइंड आउट किया. So this is Bayes rule. This is Bayes rule. इन दो लेक्चर्स में मोस्टली जो है ये पार्टीशंस और Bayes रूल जो है यही दो चीजें ज्यादा कवर होंगी. इनफैक्ट ये वाली एग्जांपल यहाँ दी भी है, लाहौर टू इस्लामाबाद motorway, and you can take a look at this if you have not had the chance to go through the notes. और इस तरह के बहुत सारे जी और इस तरह के काफी सारी और एग्जांपल्स की हुई हैं जिसमें आपने ये पार्टीशंस और Bayes रूल इस्तेमाल करने हैं. These are the two major concepts that are discussed in these lectures. जी क्वेश्चन पूछ लें प्लीज निदा. We did the example in the lecture of we had like the 52 cards and then we wanted to find the probability that, like, we were doing it in steps, but then the part we were doing the second ace goes to somebody other than the first person. Yeah. I understand why we did it like this, but I wanted to ask that if we didn't partition this into 13 spaces and we just said that we have 4 people, then the probability that the second ace goes to any of the 3, can't we do 3 by 4? Why didn't we do it like that? 3 by 4. Other than if we take out that one person. So it's important to realize how we have defined these events.
So we have defined the event E1 that the first ace can go with any player. Okay. What is our goal? Our goal is that we have to find the probability that each player gets one ace. Each player gets one ace. इसका मतलब है वो 4 aces होती हैं ना cards के अंदर, and these 4 aces are one each with each player. Okay? And you have divided 13 cards among the players because these 52 cards are divided into 4 groups and each group has a size of 13. ठीक है, so पहले वाले के लिए भी 13 है, दूसरे के लिए भी 13 है, तीसरे के लिए भी 13, चौथे के लिए भी 13 है. So I want to, the way that the events are defined or the solution has been set up, and why the solution has been set up this way is because ये experience से आता है कि मैंने events कैसे define करने हैं. But given that we have defined the events this way, probability of E1 is first ace is with any player. What is that probability? This probability is 1. पहली वाली ace मैं उठाता हूं, मैं किसी को भी दे दूं, चली जाए, क्या फर्क पड़ता है. Now the second ace, first 2 aces are with different players. What that means is कि आपने पहली वाली एस जो है वो किसी एक प्लेयर को दे दी है, जो दूसरी वाली जो एस है इट्स विद one of the 3 other players. And your question is, okay, why is probability of E2 given E1? What is the probability of E2 given E1? Why is it not 3/4? Right? That's the question. Yeah. Like, why can't we just divide it into 4 groups? We have actually divided into 4 groups. Lekin think about it, कि probability of E2 given E1, मैंने पहले वाली ace जो है वो मैंने एक player को दे दी है. Now the second ace could go to any of the 3 players, and this thing is, since we have many other cards as well to distribute. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ aces distribute करनी है, मैंने बाकी cards भी तो distribute करने हैं. ठीक है ना? So basically what we are saying is that out of 51 remaining spaces, ये 51 remaining spaces हैं आपके पास, the second ace can go to any of the 39. यानी मैं ये players को मैं नहीं इस तरह कर सकता. क्यों? क्योंकि ये इस player के पास 2 aces भी तो आ सकते हैं. I need to make sure कि इसके पास अगर ये वाला player 1 था, इसके पास एक ace आ गई है, तो all these 13 spaces are gone. ठीक है, we cannot put another ace in. ये देखें, इसके पास एक ace आ गई, फर्ज करें इसके पास एक ace आ गई है, and let's say ये diamond, ace of diamonds है. ठीक है, अब इसके पास 12 और जगह हैं. ठीक है, इसके पास 12 और जगह हैं. उन 12 जगहों के ऊपर I don't want to put an ace there. So that means कि I am left with 39 other spaces. इन 39 स्पेसेस में से दूसरी एस आ सकती है, और दूसरी एस 39 स्पेसेस में जो आएगी ये आउट ऑफ द रिमेनिंग 51 स्पेसेस है, कि 12 ये वाली हैं और 39 ये वाली हैं, वो टोटल होके 51 होती है. ठीक है. Okay, so basically it's not like we just have the aces. We have 51 other cards, and the ace can be like anywhere in between those. जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है. And if I modify this problem, मैं ऐसा करता हूं कि I have a deck of cards, 52 cards. I separate out the 4 aces. और बाकी जो 48 कार्ड्स हैं उनको मैं डिस्कार्ड कर देता हूं, उनको फेंक देता हूं. ठीक है, उनको मैं फेंक देता हूं. Now if we try to answer this question कि ये जो 4 कार्ड्स हैं और हर एक के पास एक एक केस चली जाए, वो ऑब्वियसली उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर अब आपके पास 1 ही आएगा. व्हाई? बिकॉज हर एक को हमने एक एक कार्ड देना है और हमें पता है कि चारों के पास एक एक केस चली जाएगी. Right? Yeah, I get it.
Thank you. Sure. So there was another question that I wanted to ask. I think this was in one of the homework assignments. There was a question that said that given a deck of 52 cards, what is the probability that the 14th card is an ace, something like that. So for a question like that, do you not need to know what the probabilities of each of the first 13 cards is? You need to know those. You need to know those. It's exactly the same thing as saying, okay, what is the probability that second ball is red? You need to know whether the first ball was red or black. So can you like walk me through how to do that, because I was a little lost. Which question is that? Question number नहीं याद, मैं बस ये याद है तो So I have the question homework statement. here. ये मैंने share किया हुआ है. I have shared the homework here. I think it was question 13 or 14. 13, 14. इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है. It might have been the last homework. Oh. Last homework था. चलें last भी देख लेते हैं. लास्ट होमवर्क भी देख लेते हैं. उसके तो सॉल्यूशंस भी हमने अपलोड किए एंड सॉल्यूशंस. Yes, I think it's this one, problem 13. हाँ. सही है. So 14th card is an ace. What is the probability that the first? Acha, so there are two parts to it. So you are interested in the first part, right? Yes. What is the probability that the 14th card dealt is an ace? Probability that the 14th card is an ace can be found by considering that there are less than 4 aces in the first 13 cards and the 14th card is an ace. Okay. So what we can do here is I will need to know कि first 13 cards के ऊपर क्या हुआ है. ठीक है. So if in the first 13 cards I have 0 aces or 1 ace or 2 ace or 3 ace, that is the only way I can get a possibility of the 14th card to be an ace. If in the first 13 cards you have 4 aces already in the first 13 cards, there is no way you can get the 14th card to be an ace. You agree with that? Yes. So now in order to get the 14th card to be an ace, there is some probability associated with that. Okay? But before that, what happened in the first 13 cards? Okay, there are different pathways, and one path is okay, you did not get any ace in the first 13 cards. Okay? So let me just my pen is not able to write उस वाली window में. So in the first 13 cards, you have 0 aces, or you can have 1 ace, or you can have 2 aces,
or you can have 3 aces. You can also have 4 aces, by the way. इसके अलावा तो और कोई possibility नहीं है ना? Yes. Right? So And if you get 4 aces, then the probability of getting an ace to the 14th card is all yes, automatically and now zero. if you got 0 aces in the first 13 cards, if you got 0 aces in the first 13 cards, then the 14th card, there is still a chance कि 14th card भी आपके पास ace ना आए. तो ace आ जाए 14th card, ace आ जाए या a complement आ जाए. ठीक है? इसी तरह in the first 13 cards, if you got just one ace, then there are 2 possibilities: ace or ace complement, ace or ace complement, ace or no ace. 4 aces may ace or no ace, and we know that the probability of this is going to be 0. Because if you got 4 aces in the first 13 cards, then it is not possible to get another ace on the 14th card. क्यों? क्योंकि चारों की चारों पहले निकल गई. सही है? Yes. Now let's take a look at one of these paths. किसी एक path को देख लेते हैं कि if you have 0 aces in the first 13 cards, and we will find the probability of that, and try to find out the probability of ace given that you got 0 aces in the first 13 cards. Okay? What is the probability that you have separated out the 13 cards? Now you are left with 52 minus 13 cards, which is 39 cards. Okay, and then you have 4 aces, 4 out of 39 is the probability that you will get an ace if you got 0 aces in the first 13 cards. Okay? And then you can also find the probability of 0 aces in the first 13 cards, which means you picked 13 cards and you got you picked 13 cards, you got 0 aces there. You got 0 aces there, which is the number here. Out of 48, you got 13 cards, and out of 4, you got 0 cards. Out of 48, which are non-aces, you got 13 cards, and out of 4, you got 0 aces, divided by 52 में से आपने 13 pick किया. So this is the probability you got 0 aces in the first 13 cards. ठीक है? इस probability को इसके साथ multiply करें. So this is the probability that first 13 cards had 0 aces and the 14th card was an ace. Was an ace. ठीक है? और इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे यही किया हुआ है. ये जो probability of E0 लिखा हुआ है ना, probability of E0. ठीक है? अल्दो के यहाँ पे अभी हमने जब ये होमवर्क किया था उस वक्त तक तो हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था. बट इफ यू लुक एट इट, ये द वे दैट दीज इवेंट्स हैव बीन डिफाइंड, ये ऑटोमेटिकली जो है वो पार्टीशंस ही कैलकुलेट करते हैं, जिसका हमें इस वक्त नहीं पता था जब हमने होमवर्क 3 किया था, और उस वक्त जरूरत भी नहीं थी. बट नाउ वी नो पार्टीशंस, सो वी कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि ये कैसे हुआ वैसा. Okay. That's what that was confusing me as well, because I was listening to what you were saying, and I was like, you can use this to solve that question. And but is this clear now? Well. Is this clear now? Yes. ठीक है, great. You have another question, or anyone else who has a question? Sir, I have a question from the quiz that on Tuesday. The quiz on Tuesday. Sure. Yeah. I think it was the last or the second last question, where we were talking about, like, we have a certain number of wins and losses, and then we have to find the runs. So the first part was just like, I mean, we have the runs. We had like 5 runs, but then in the second part of the question, they said that given that the first match, like, we won the first match and we won the last match. So I wasn't sure how to do that, because then the first and the second could be part of a run as well, or they could not be, or like the first one could be and the second one could not be. That is actually true. It's possible that the first
and the last wins, they are part of the runs, or they make a run themselves, or Yeah. it is possible that you have another win afterwards and they become part of that run. It's certainly possible. So how do we address that? How do we solve that? Let me see. I think I may have written the solution for that. देखते हैं, इसको मैं शेयर कर लूंगा अगर मैंने यहाँ सॉल्यूशन मेरे पास हुआ तो. Yeah, I think I have written the solution for that. So let me share that. Can you see the share? Yes. Okay, so this was for some specific data, and 24 wins and 11 losses. Exactly 6 winning streaks. This was easy to answer. The part A was easy to answer, right? Yeah, part A भी बता दें कैसे करना. No, part A was okay. Part A was okay. So part B was the first and last matches are wins. So first is a win and the last is a win, and these two are fixed. You can see the screen? Yes. ठीक है. और उसके बाद देखें, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है. उसके बाद I have x1 is the number of wins and x1 can be greater than or equal to 0. ठीक है. x1 can be greater than or equal to 0, which is the number of wins here, and y1 is the number of losses. y1 must be greater than 0. ठीक है. So ये y's जितने भी हैं जो losses हैं आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास ये होने चाहिए positive, and all the x's which are the number of wins, they have to be positive except for x1 and x2, x1 and xr, which can be 0. You understand that? Yes. So x1 जो है, which is the number of wins right after the first win, the number of wins right after the first win, they can be 0 or more. अगर ये 1 भी हुए या 2 भी हुए या 3 भी हुए या 0 भी हुए, तो आपको एक रन तो यहां से मिल जाएगा, एक स्ट्रीक यहां पे मिल जाएगी. ठीक है. So the requirement on x1 is that it has to be greater than or equal to 0. It can be equal to 0, but x2 here, ये अगर आप देखें x2 जो है वो 0 नहीं हो सकता, वो has to be greater than 0. वो पॉजिटिव होना चाहिए. Does that make sense? ठीक है. So ये करने के बाद ये जो दो आपके wins हैं उनको हमने निकाल दिया, तो ये n-2 रह गए हैं, and n is the total matches जो भी उन्होंने प्ले किए थे. ठीक है. फिर उसके बाद जो है वो I can transform this equation, ये x1 x2 all the way xr, उसमें मैं x1 को x1 प्राइम से रिप्लेस कर देता हूँ. x1 प्राइम से रिप्लेस करने से क्या हुआ कि इसके मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने, which means कि x1 प्राइम has to be greater than 0. तो मैंने x1 को ट्रांसफॉर्म किया x1 प्राइम में, और x1 प्राइम is basically ये x1 और x1 प्राइम में ये 1 का डिफरेंस मैंने डाल दिया है, और वो जो 1 का डिफरेंस था वो मैं राइट हैंड पे ले गया हूँ, वो n-2 जो है, इसलिए वो आपके पास n बन गया. Yeah. ठीक है. So x1 is basically x1 prime minus 1. So वो जो -1 यहाँ पे था, उस -1 को मैं राइट साइड पे लेके गया हूँ तो +1 हो गया. इसी तरह xr प्राइम मैंने लिया, यहाँ पे xr की जगह पे xr प्राइम लिखा है. So again xr can be 0 but xr prime cannot be 0. It has to be 1 or larger. ठीक है.
तो वही जो 1 है वो वहां से भी हम राइट साइड पे ले गए, तो ये n-2 जो है आपका ये n में हो गया, और फिर इसके हम पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, एंड देन वी गेट द आंसर फ्रॉम दैट। ओके, ठीक है। ठीक है, सर, मेक आप ये सेंस? क्विज की सॉल्यूशंस अपलोड करते हैं? हाँ, नहीं, ये नहीं करते। नहीं करते? ओके, नहीं। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लें, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक और है, ये थैंक सारे यू। क्वेश्चंस के लिखे हुए भी नहीं होते, इसके तो लकीली जो है वो इसका लिखा हुआ था। कोई और क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू डिस्कस? पार्टीशंस एंड बेस रूल, यू नो, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक्स हैं ये, बट इम्पोर्टेंट। गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स जो हमने ये सैंपल नोट्स के अंदर दी हुई हैं, एंड आई थिंक you know that should be sufficient to give you a good understanding of both the concepts, base rule और partitions का। so ये भी पता चलेगा कि किसी प्रॉब्लम को क्यों ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, यानी वो टिकट्स और जीटी रोड मोटरवे वाली जो हमने एग्जांपल दी है, if I ask you के find the probability of ticket, तो वहां पे partitions ही लगेगा। if I ask you the probability that the traveler took the motorway, given that they got the ticket or did not get the ticket, so that's something which happened later, वो मैंने आपको पहले बता दी है कि टिकट मिला है या नहीं मिला, which happens later on. First you have to decide कि आपने मोटरवे से जाना है या जीटी रोड से जाना है। तो अगर बाद वाला इवेंट वो गिवन हो और पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछें, so that's something which is a good candidate for applying the Bayes rule. ठीक है? So question 12 is a repeated from a previous one. अब दोबारा से सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ सॉल्व हो जाएगा। Let me just make sure कि ये क्वेश्चन जो है 4 प्रॉब्लम 12, हाँ 4 टीवी रिपेयरमैन वाला सही है। See. So इसको उसी तरह से सॉल्व कर दें जैसे पहले सॉल्व किया हुआ था। वैसे this can also be solved by using independence, but या बेशक उस तरह सॉल्व कर दें जैसे पहले सॉल्व किया था, या इंडिपेंडेंस से कर दें, that's both are acceptable. In fact you will notice के ये probability के counting के ये सवाल, you know, these questions can be solved by multiple methods. कुछ जगह पे तो हम alternate method बता देते हैं, but you know हर जगह पे नहीं बताते, but doesn't mean कि वो और किसी तरीके से नहीं सॉल्व हो सकता। So somebody had asked this question, ये जो एक और क्वेश्चन था, I think question 12 from वो जो 14th card to be an ace, that was solved in the previous homework without knowing के पार्टीशन से भी ये सॉल्व हो जाता है। So पार्टीशन से हमने डिस्कस किया कि उसको पार्टीशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
ये वाला। कोई और किसी का क्वेश्चन हो? एनीथिंग एल्स? कोई फीडबैक अगर देना चाहे, इफ यू वांट टू गिव सम फीडबैक अबाउट के हम ये जो थर्सडे वाले सेक्शन में उन लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं, अगर आप समझते हैं कि किसी और तरीके से डिस्कस करना चाहिए या कुछ और चीज डिस्कस करनी चाहिए, तो प्लीज यू नो फील फ्री टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन दैट एज वेल। कोई और क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन? क्विज के ऊपर कोई फीडबैक अगर देनी हो? ज्यादा इजी हैं, ज्यादा डिफिकल्ट हैं, और जस्ट अबाउट राइट? कोई उस पर फीडबैक हो? अहमद मुजम्मिल की फीडबैक है कि क्विज वाज वेरी लेंथी दिस वीक। या आई टेंड टू एग्री विद दैट, सो डिसएग्री नहीं कर सकते, बट आई थिंक व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इज टू रियलाइज कि बहुत इजी तरीके भी थे सॉल्व करने के। यू नो, इफ यू गेट स्टक इन सम प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है कि एक कोई लेंथी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो फॉर एग्जांपल, मैं जनरली व्हाट वी ट्राई टू डू इज के 30 मिनट्स हैं और 30 पॉइंट्स हैं। सो अगर 6 पॉइंट्स का एक प्रॉब्लम है तो वो 6 मिनट में सॉल्व हो जाए, और 3 पॉइंट्स का है तो वो 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाए, एंड समटाइम्स इवन फास्टर। सो फॉर एग्जांपल, जो पहला क्वेश्चन था इसमें, लेट्स सी, अगर मैं ये स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, let me try to do that. Okay, so ये अगर क्विज में चले जाएं, yeah, so if you look at the first question, ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें ये 2 पार्ट्स हैं एंड इट हैज 4 पॉइंट्स, व्हिच मींस के रफली 4 मिनट्स में ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन था। क्यों? यू नो, रियलाइजिंग इट, इफ वंस यू रियलाइज देन इट्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है? इफ यू डोंट रियलाइज यू कैन गेट स्टक इन पार्ट बी, बट इफ यू रियलाइज कि ये कैसे सॉल्व करना है, if it clicks quickly, तो फिर आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि पार्ट ए में तो वो कहता है कि टेल विद n1, वी नो कि एक कॉइन है आपके पास और एक डाइस है, तो 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। सो you get a tail with some number, tail with 3, so the probability of that is going to be 1 out of 12। ठीक है? ये 1 out of 12 होगी। 12 सैंपल पॉइंट्स हैं, एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इक्वली लाइकली है, तो 1/12 होने चाहिए। ठीक है? पार्ट बी में हमने क्या किया, हमने 2 सैंपल पॉइंट्स दे दिए कि टेल विद सम नंबर एंड हेड विद सम अदर नंबर, और मे बी द सेम। ठीक है? तो ये हमने 2 पॉइंट्स दे दिए एंड दे आर इक्वली लाइकली। मैं किसी एक के साथ अनफेयर नहीं हो सकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन अपीयर्स, वन सैंपल पॉइंट happens before the other one if you repeat the experiment? Yeah. So the probability cannot be anything other than 0.5, cannot be anything other than 0.5। क्यों? Because ये दोनों के दोनों जो है, अगर मैं कहूं कि नहीं ये 0.7 है,
तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि वो एक को हम जो है वो अनफेयरली ज्यादा वेट दे रहे हैं, नहीं, ये हेड और टेल जो है वो उनकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है और 1/6 प्रोबेबिलिटी है फॉर ईच नंबर, और टुगेदर एनी नंबर विद अ हेड और एनी नंबर विद अ टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/12 है। ठीक है, सो जब दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर है तो मैं किसी एक को ज्यादा अनफेयर किसी के साथ नहीं हो सकता। अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे कौन सा पहले आ जाए, इक्वल चांस है दोनों का पहले आने का। सो वंस वी रियलाइज दैट देन इट्स वेरी क्विक टू आंसर दिस। ठीक है, सिमिलरली ये जो हेड्स वाला जो हेड मैचिंग वाला प्रॉब्लम था, हमने हेड्स की जगह पे ये वॉचेस कर दी थी। दिस वाज अ वेरी वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ द हेड मैचिंग प्रॉब्लम। जो हेड मैचिंग प्रॉब्लम थी उसके अंदर जो है वो आपने बड़ा लंबा काम करना था। ठीक है, इसमें तो हमने सिर्फ ये कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एहसन एंड तारिक विल एंड अप विद देयर ओन वॉचेस। तो इन दो को तो इनकी घड़ियां दे दी। ठीक है, बाकी जो लोग रह गए हैं I can arrange them in n-2 factorial ways. n-2 factorial ways. So n-2 factorial divided by n factorial, that's the answer. Yeah, n-2 factorial divided by n factorial, that is your answer. Again, it's थोड़ी प्रैक्टिस के साथ जो है ना वो ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ओ ये तो ऐसे सॉल्व करना था। सो इसके लिए जो है 2.5 पॉइंट्स थे, मेरा ख्याल है ये 2.5 पॉइंट्स के मिनट्स के अंदर जो है ना हो जाना चाहिए था। सिमिलरली ये प्लेइंग कार्ड वाला, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये इसी तरह के हैं कि कोई ना कोई चीज कोई क्लिक करनी चाहिए थी। ये डाइस में जो पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन सम, इसमें आपने वो 36 पॉइंट ड्रॉ ही करने थे सिंपल, और फिर उसके बाद जो है वो काउंट करना था। सो दैट वाज अगेन नॉट टू डिफिकल्ट। बाकी ये रन्स वाला जो सवाल है, ये दिस वाज जस्ट पिक्ड फ्रॉम द होमवर्क, और ये हमने होमवर्क में एक्चुअली शायद नहीं था, ये सवाल जो है ये हमने नोट्स के अंदर सॉल्व किया हुआ था। सो ये थोड़ा सा मे बी इट वाज ए लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। 6 पॉइंट्स थे तो शायद ये 6 मिनट्स में मे बी ना होता, तो मे बी थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसको लगता। ये वाला भी दिस वाज आल्सो इजी सवाल था। इसी तरह से ये डाइस रोल्स का भी जो है। सो यस, देयर वर मेनी क्वेश्चंस, 7 प्रॉब्लम्स थे इसके अंदर और पार्ट्स भी थे, तो आई अंडरस्टैंड के लेंथी था, बट सबके लिए लेंथी था। एंड जस्ट टू टेल यू, मैं आपको शो कर देता हूँ इसमें, इनफैक्ट assessments and quiz 3, yeah, quiz 3 था, और quiz 3 में if I look at the statistics, ठीक है, so you can look at the distribution. So ये देखें, ये बड़ी, this is a very reasonable distribution. Lots of people received more than 15 marks, और ये देखें 26 तक भी मार्क्स आए, 26 27 तक मार्क्स आए लोगों के। 7 people in the 24 to 26 वाली रेंज, ठीक है, which is a decent, this is a decent distribution of marks among the students. या तो ऐसा हो रहा होता ना कि सब 15 से ज्यादा ही नहीं किसी के भी आ रहे होते, या 10 से ज्यादा ही किसी के नहीं आ रहे होते, तो फिर हमें ऐसा लगता कि ओहो ये तो क्विज बहुत ज्यादा या तो मुश्किल हो गया या टाइम ही नहीं मिला इसके लिए। ऐसा है नहीं, we can see this entire distribution, and if you want to, अगर आप इसके लोअर एज के ऊपर हैं और हायर पे आना चाहते हैं, so the only suggestion is कि वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो आप क्विकली इनको सॉल्व कर सकेंगे। once the course is finished, तो मैं आपसे उस वक्त क्विज 3 का कोई सवाल पूछूंगा तो आप उसको आंखें बंद करके आंसर कर सकेंगे, बट ऑब्वियसली once you are learning the stuff, तो थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, we understand that, that's why we get this distribution.
और कोई क्वेश्चन हो, कोई एनी कमेंट, एनीथिंग एल्स? असल में एक और भी चीज है कि ऑनलाइन असेसमेंट्स में it's not a good idea to give lots and lots of extra time for a very few problems. फिर लोग जो है वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं about the collaborations and you know, although I trust the students के वो खुद ही सॉल्व कर रहे हैं इसको, लेकिन फिर कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं and you know so it's a good idea to keep everyone busy during those 30 minutes और वो अपने 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 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि डेटा सबको जो है वो डिफरेंट ही मिले. तो क्वेश्चंस जो हैं वो although maybe the statement would be the same but the data that they will get would be different. ओके okay. कोई और किसी का क्वेश्चन हो? So very few of you left here. अगर नहीं है तो फिर then I will stop the share and close the session. Sharing stop. And we will see you on Tuesday. ठीक है. So I'll upload the videos for next week. ये मैं कल तक कर दूंगा, ये शायद आज ही कर दूं. ठीक है. Okay, have a nice. Okay जी, खुदा हाफिज. Have a nice weekend.